सेना प्रमुख वो इसमें जो LCA है उसको फ्लाई कर रहे हैं। एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी इस पूरे फॉर्मेशन को लीड कर रहे हैं। ये भारतीय स्वदेशी तकनीक है जो इस वक्त यहाँ से उड़ान भरती हुई निकली है। ये अपने आप में ही सबसे बेहतरीन नज़ारा होता है किसी भी ऐसे एयर शो का। और एक के बाद एक अब भारतीय सेना के वो तमाम एयरक्राफ्ट अलग अलग फॉर्मेशन में यहाँ पे उड़ान भरते हुए आएंगे। प्रधानमंत्री के सामने ये अपनी काबिलियत को दर्शा रहे हैं कि कैसे भारतीय सेना अपने आप को इंडिजिनाइजेशन करते हुए जो है लगातार मजबूत कर रही है। अभी थोड़ी देर में ही बाकी आप सामने देख सकते हैं। ये ऊपर ये जो एयरक्राफ्ट देख रहे हैं 5 एयरक्राफ्ट है, नेत्रा फॉर्मेशन है ये, जिसमें 2 सुखोई MiG-29 और एक अवैक्स उड़ान भर रहा है। सुखोई और MiG-29 रशियन है, लेकिन वो एब्रो पे जो नेत्रा यानी कि रडार बना हुआ है, early warning and control system known as Netra, our own eye in the sky. This high-value aerial asset is always accompanied by dedicated fire escorts to shoot down any potential threats during wartime. Is being escorted by 2 Sukhoi 30 MKIs and 2 MiG-29 aircraft. Showing the fighter might of the Indian Air Force. Now is the next formation named Rafale है और ये सीधे तौर पर उस ताकत aircraft, the MiG-29, Rafale, Jaguar and Mirage 2000. Ladies and gentlemen, from your right, the Arjun formation. और आप सामने देख सकते हैं कि ये तस्वीर, ये 9 एयरक्राफ्ट है LCA। ये फॉर्मेशन जो है वो अपने आप में ही ये बताने को The LCA is the smallest and the lightest aircraft in its class in the world and yet packs a powerful punch. Ladies and gentlemen, the Tejas. Coming up from your right now will be the Indian Navy's P-8I multi-mission maritime patrol aircraft. This military derivative of the next generation 737-800 combines superior performance and reliability with an advanced mission system that ensures maximum interoperability in the future battle space. The aircraft undertakes a wide range of missions including ISR, anti-submarine warfare and search and rescue. Ladies and gentlemen, from your right, the Indian Navy's P-8I. Ladies and gentlemen, please brace yourself for the mighty jets, the Sukhoi 30 MKI, bringing in an element of surprise very soon. Sukhoi
formation pulling up, making a trishul or trident while soaring in the skies. This formation displays the might of the Indian Air Force like a trishul of Lord Shiva, the destroyer. Lo and behold, you now have a trishul in the sky. We now hand over the proceedings to the inaugural area. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Governor of Karnataka, Shri Thawarchand Gehlot ji, Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh ji, Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Baswaraj Bommai ji, Honorable Minister of Civil Aviation, Shri Jyotiraj Scindia ji, Honorable Raksha Rajya Mantri Shri Ajay Bhatt ji, distinguished dignitaries and guests, friends from the media, ladies and gentlemen, Namaskara, Yellarigu Aero India ge Suswagata. Good morning and welcome to the inaugural ceremony of the 14th edition of Aero India 2023. India is a land of a billion heartbeats, a billion dreams, a billion ideas, and a billion possibilities. As our Honorable Prime Minister leads us towards an Atmanirbhar Bharat, we are fortunate that the Prime Minister has graced the largest ever Aero India this year, the runway to a billion opportunities. May I request the Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh ji, to convey the welcome address. देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गवर्नर ऑफ कर्नाटका श्री थावरचंद जी गहलोत, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका श्री बसवराज जी बम्बई, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन श्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया, श्री अजय भट्ट जी, रक्षा राज्य मंत्री, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर्स एंड अदर पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज, जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सर्विसेज के हमारे चीफ, एडमिरल आर हरिकुमार, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जनरल मनोज पांडे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, श्री गिरधर अरमाने, डिफेंस सेक्रेटरी, अन्य गणमान्य प्रतिनिधि और अधिकारी वर्ग, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, एल्लारुगु नमस्कार। आज एरो इंडिया 2023 के उद्घाटन समारोह के महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सब के बीच होना हम सब के लिए एक प्रसन्नता का विषय है। अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर आपने यहाँ अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की है। कर्नाटक की इस ऐतिहासिक और महान धरती पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा देश हर क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयां छू रहा है। विश्व के राजनीतिक और आर्थिक मानचित्र पर हमारा देश आपके नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में बड़े मजबूती के साथ उभर कर सामने आया है। एरो इंडिया एरोस्पेस सेक्टर का शोकेस है, जिसकी दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हाइट एंड स्पीड। यही दोनों गुण ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की वर्किंग एवं पर्सनालिटी को डिफाइन भी करते हैं। हाइट ऑफ इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट फॉर इंडिया,
स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड डिलीवरिंग रिजल्ट्स। विश्व के आकाश में भारत एक ऐसे सितारे के रूप में उभरा है जो न केवल स्वयं जगमगा रहा है बल्कि औरों को भी अपनी आभा से आलोकित कर रहा है। इन सबके पीछे अगर कोई प्रेरक शक्ति है तो वह है आपके आह्वान की शक्ति, आपके संकल्प की शक्ति और आपके लोक कल्याण के प्रति समर्पण की शक्ति। देवियों व सज्जनों, आज हमारा रक्षा क्षेत्र अपनी पूरी तन्मयता के साथ राष्ट्र के सशक्तिकरण के पथ पर अग्रसर है। हमारे रक्षा क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में एक लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में रक्षा क्षेत्र ने सफलता के अनेक पड़ाव पार किए हैं जो आगे चलकर रक्षा क्षेत्र की मजबूती के स्तंभ बने हैं। एरो इंडिया भी उन्हीं स्तंभों में से एक है जिसने कदम दर कदम भारतीय रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान की है और इसे दुनिया में एक नई पहचान भी दी है। साथियों, कर्नाटक की भूमि धर्म, दर्शन, अध्यात्म, शौर्य, पराक्रम और विज्ञान की यह भूमि रही है। यह प्रदेश इंडस्ट्रियलाइजेशन में पायनियर रहा है और हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान देने वाले सबसे प्रमुख राज्यों में से एक है। ऐसे में एरो इंडिया के आयोजन के लिए यह बेहद उपयुक्त स्थान है। पिछले एक सप्ताह में 3 अलग अलग कार्यक्रमों में मुझे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का अवसर मिला है। पहला तुमकुरु, दूसरा लखनऊ और तीसरा आयोजन आज बेंगलुरु में संपन्न हो रहा है। इनमें तीनों ही कार्यक्रम इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित रहे हैं, जिसमें से 2 तो कर्नाटक राज्य से ही जुड़े हुए हैं। इससे हमें क्या देखने को मिलता है? इससे यह देखने को मिलता है कि देश के इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रति प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट कितना स्ट्रांग है। साथियों, एरो इंडिया का यह आयोजन देश के विशेषकर कर्नाटक राज्य के इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रति आपके कमिटमेंट का एक एक्सप्रेशन है। प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक की भूमि चंदन की भूमि है। जिस तरह यहाँ के चंदन की सुगंध देश दुनिया में दूर दूर तक फैलती है, उसी तरह यहाँ आयोजित होने जा रहे एरो इंडिया के माध्यम से भारत की रक्षा क्षमताओं की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस आयोजन को इतने ग्रैंड स्केल पर आयोजित करने में श्री बसवराज जी बोम्मई, चीफ मिनिस्टर कर्नाटका का योगदान अत्यंत प्रशंसनीय है। साथियों, भारत अपने बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट और कास्ट कॉम्पिटिटिवनेस के कारण एक बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बना हुआ है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भी यह आगे बढ़ा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की व्यापक दृष्टि और संकल्प के साथ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 4-5 वर्षों में यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष भारत की G20 की प्रेसिडेंसी भी ग्लोबल फोरम पर भारत के बढ़ते कद को दर्शाती है। देवियों व सज्जनों, इस आयोजन में अनेक देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स, सर्विस चीफ्स, सीईओज, ऑफिशियल्स और डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। मैं आप सभी का रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे इस अगस्त गैदरिंग को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस एग्जीबिशन में देश विदेश से 700 से अधिक एग्जीबिटर्स अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह की विशाल भागीदारी भारत के उभरते बिजनेस पोटेंशियल में डोमेस्टिक एवं ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी के एक नए कॉन्फिडेंस का भी प्रमाण है। मैं आप सभी से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर भारत की यात्रा में सहयात्री बनने का भी आह्वान करता हूं। अंत में एक बार फिर एरो इंडिया 2023 के इस महाकुंभ में हमें अपना मार्गदर्शन देने के लिए, यहां उपस्थित होने के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अतिथियों को हमारे यहां
भगवान का दर्जा दिया गया है। मैं देश विदेश से पधारे देवतुल्य सभी आगंतुकों की उत्साहजनक भागीदारी के लिए धन्यवाद देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I request the Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Baswaraj Bommai ji, to kindly address the August gathering. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆವಾಗಿರುವಂಥ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಆದರಣೀಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಾಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ರಕ್ಷಣಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಏರೋ ಶೋದ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ, ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಅವರೇ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಭಟ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ದ ಆನರಬಲ್ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸೀಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮಿ ಸ್ಟಾಫ್, delegates, ladies and gentlemen, I'll not take much time. I'm standing here in front of you people and Honorable Prime Minister just to express my gratitude that Honorable Prime Minister and Honorable Raksha Mantri has given us opportunity to host this Aero India show for the 14th time continuously to Bengaluru and Karnataka. I am deeply indebted and I express my profuseful thanks to Honorable Prime Minister and Rakshana Mantri ji. This edition is a very special edition in terms of size, in terms of performance, in terms of exhibits. It is one of the largest air show internationally, and India has once again proved its capability in defense sector as well as in conducting this marvelous air show during COVID time. When Paris Air Show was closed, we performed in 2021 in the very same avenue, and this time we are repeating it with special exhibits, number of exhibits, number of delegates and number of displays. Therefore, we are greatly proud of our Aero India show, Defence Ministry and capabilities of our defence, which will be exhibited in another 4 days. As far as Karnataka is concerned, right from 1940, when HAL was found and it started working, in 1950, BHL, BAL, DRDO started working. In 1960s, ISRO started working. And in 1970, the first Aryabhatta, the first satellite was assembled in Bangalore. And then we have not seen back. Now we are one of the leading states in aerospace and defense. 65% of our capabilities in the country is from Bengaluru and India. Sir, we just promise you that going by your hard work and your ambition to make India the greatest world power, global power, Karnataka will certainly one of the greatest contributors in terms of economy, social order, as well as in defense. And we have got a new defense and aerospace policy where it's very ambitious. In next 5 years, we are going to have we have laid down a policy where more than 45,000 youngsters
will be involved in building the defense and aerospace industry in Bengaluru and other places. And I once again, I thank our Honorable Prime Minister who dreams of doing things, dreams of achieving, and dreams of the greater India. And not only dreams, he makes the dreams come true. He strives to make the dreams come true. He is leading the country by example and he is leading by front. Therefore, I once again thank and congratulate Honorable Prime Minister, Honorable Rakshana Mantri, and I once again assure the performance of Karnataka in defense and aerospace will continue to add to the strength and might of our defense. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. May I request the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to release the Aero India 2023 commemorative stamp. Thank you, sir. It is my privilege to request the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to kindly address the distinguished gathering of Aero India 2023. आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित कर्नाटका के गवर्नर श्री, मुख्यमंत्री श्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सदस्य, देश विदेश से आए डिफेंस मिनिस्टर्स, इंडस्ट्री के सम्मानित प्रतिनिधि, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, मैं एरो इंडिया के रोमांचक पलों का गवाह बन रहे सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। बेंगलुरु का आसमान आज नए भारत के सामर्थ्य का साक्षी बन रहा है। बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई, नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। साथियों, एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। देश विदेश के 700 से अधिक एग्जीबिटर्स इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसने अब तक के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसमें भारतीय एमएसएमईज भी हैं, स्वदेशी स्टार्टअप भी हैं और दुनिया की जानी मानी कंपनियां भी हैं। यानी एरो इंडिया की थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, जमीन से लेकर आकाश तक हर तरफ नजर आ रही है। मेरी कामना है आत्मनिर्भर होते भारत की ये ताकत ऐसे ही बढ़ती रहे। साथियों, यहां एरो इंडिया के साथ ही डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव और सीईओज राउंड टेबल, इसका भी आयोजन किया जा रहा है। दुनिया के विभिन्न देशों की सहभागिता
सीईओज की ये सक्रिय भागीदारी एरो इंडिया के ग्लोबल पोटेंशियल को और बढ़ाने में मदद करेगी। ये मित्र देशों के साथ भारत की विश्वसनीय भागीदारी को आगे ले जाने का भी एक माध्यम बनेगा। मैं इन सभी इनिशिएटिव्स के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री के साथियों का अभिनंदन करता हूं। साथियों, एरो इंडिया एक और वजह से बहुत खास है। ये कर्नाटका जैसे भारत के टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिसकी महारत है, एडवांस है, ऐसे राज्य कर्नाटका में हो रहा है। इससे एरोस्पेस और डिफेंस में नए अवसर पैदा होंगे। इससे कर्नाटका के युवाओं के लिए नई संभावनाएं खुलेगी। मैं कर्नाटका के युवाओं से भी आह्वान करता हूं, टेक्नोलॉजी को फील्ड में आपको जो महारत हासिल है उसे रक्षा क्षेत्र में देश की ताकत बनाइए। आप इन अवसरों से ज्यादा जुड़ेंगे तो डिफेंस में नए इनोवेशंस का रास्ता खुलेगा। साथियों, जब कोई देश नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है तो उसकी व्यवस्थाएं भी नई सोच के हिसाब से ढलने लगती है। एरो इंडिया का ये आयोजन आज नए भारत की नई अप्रोच को भी रिफ्लेक्ट करता है। एक समय था जब इसे केवल एक शो या एक प्रकार से सेल्फ टू इंडिया की एक विंडो भर माना जाता था। बीते वर्षों में देश ने इस परसेप्शन को भी बदला है। आज एरो इंडिया केवल एक शो नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रेंथ भी है। आज ये इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के स्कोप को भी फोकस करता और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी फोकस करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज दुनिया की डिफेंस कंपनियों के लिए भारत केवल एक मार्केट ही नहीं है, भारत आज एक पोटेंशियल डिफेंस पार्टनर भी है। ये पार्टनरशिप उन देशों के साथ भी है जो डिफेंस सेक्टर में काफी आगे हैं, जो देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद साथी तलाश रहे हैं। भारत उनके लिए भी एक बेहतर पार्टनर बनकर आज उभर रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी इन देशों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है और क्रेडिबल भी है। हमारे यहां बेस्ट इनोवेशन भी मिलेगा और ऑनेस्ट इंटेंट भी आपके सामने मौजूद है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज भारत की संभावनाओं का, भारत के सामर्थ्य का प्रमाण हमारी सफलताएं दे रही है। आज आकाश में गर्जना करते तेजस फाइटर प्लेन्स मेक इन इंडिया के सामर्थ्य का प्रमाण है। आज हिंद महासागर में मुस्तैद एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत मेक इन इंडिया के विस्तार का प्रमाण है। गुजरात के बड़ौदा में C-295 की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो या तुमकुर में HAL के हेलीकॉप्टर यूनिट हो, ये आत्मनिर्भर भारत का वो बढ़ता सामर्थ्य है जिसने भारत के साथ साथ विश्व के लिए नए विकल्प और बेहतर अवसर जुड़े हैं। साथियों, 21वीं सदी का नया भारत अब न कोई मौका खोएगा और न ही अपनी मेहनत में कोई कमी रखेगा। हम कमर कस चुके हैं,
हम रिफॉर्म्स का रास्ते पर हर सेक्टर में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। जो देश दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। बीते 5 वर्षों में देश का निर्यात 6 गुना बढ़ा है। 2021-22 में हमने अब तक के रिकॉर्ड 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा के एक्सपोर्ट को, उस आंकड़ों को हमने पार कर लिया है। फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि डिफेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी टेक्नोलॉजी को, जिसकी मार्केट को और जिसके बिजनेस को सबसे कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। इसके बावजूद भारत ने बीते 8-9 साल के भीतर भीतर अपने यहां डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है। इसलिए हम इसे अभी केवल एक शुरुआत मानते हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक हम एक्सपोर्ट के इस आंकड़े को 1.5 बिलियन से बढ़ाकर 5 बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे। इस दौरान किए गए प्रयास भारत के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करेंगे। अब यहां से भारत दुनिया के सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देशों में शामिल होने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएगा और इसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर और इन्वेस्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। आज मैं भारत के प्राइवेट सेक्टर से आह्वान करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा भारत के डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करें। भारत में डिफेंस सेक्टर में आपका हर इन्वेस्टमेंट भारत के अलावा दुनिया के अनेक देशों में एक प्रकार से आपका व्यापार कारोबार के नए रास्ते बनाएगा। नई संभावनाएं, नए अवसर सामने हैं। भारत का प्राइवेट सेक्टर को इस समय को जाने नहीं देना चाहिए। साथियों, अमृत काल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा देश जिससे ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश से उड़ान भरने वाला एक फाइटर पायलट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। उसे हमेशा ग्राउंड सिचुएशन की जानकारी रहती है। यही तो हमारे पायलट भी करते हैं। एरो इंडिया की गगनभेदी गर्जना में भी भारत के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसपोर्ट की गूंज है। आज भारत में जैसी निर्णायक सरकार है, जैसी स्थायी नीतियां हैं, नीतियों में जैसी साफ नीयत है, वो अभूतपूर्व है। हर इन्वेस्टर को भारत में बने इस सपोर्टिव माहौल का खूब लाभ उठाना चाहिए। आप भी देख रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में भारत में किए गए रिफॉर्म की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। हमने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और इंडियन इनोवेशन के अनुकूल माहौल बनाने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। भारत के डिफेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी देने के नियमों को आसान बनाया गया है। अब कई सेक्टर में एफडीआई को ऑटोमेटिक रूट से मंजूरी मिली है। हमने उद्योगों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाया है, उसकी वैलिडिटी बढ़ाई है ताकि उन्हें एक ही प्रोसेस को बार बार न दोहराना पड़े। अभी 10-12 दिन पहले भारत का जो बजट आया है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को मिलने वाले टैक्स बेनिफिट को भी बढ़ाया गया है। इसका फायदा डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को भी होने वाला है। साथियों,
जहां डिमांड भी हो, कैपेबिलिटी भी हो और एक्सपीरियंस भी हो, नेचुरल प्रिंसिपल कहता है कि वहां इंडस्ट्री दिनों दिन और आगे बढ़ेगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि भारत में डिफेंस सेक्टर को मजबूती देने का सिलसिला आगे और भी तेज गति से बढ़ेगा। हमें साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ना है। मुझे विश्वास है आने वाले समय में हम एरो इंडिया के और भी भव्य और शानदार आयोजन के गवाह बनेंगे। इसी के साथ आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय। Thank you, sir. May I request the Honorable Prime Minister and dignitaries on the dais to kindly take their seats on the grandstand. Ladies and gentlemen, with the flying display ahead, Aero India 2023 is all set to soar. We hope that this edition leads to building of bonds, new partnerships and discovery of new horizons. प्रोत्साहित किया जा सके और इसी के मद्देनज़र भारत ने अपनी नीतियाँ भी बनाई है। अलग अलग तरीके की पॉलिसी भारत सरकार की तरफ से फिलहाल जारी है और उसी के तहत इस इंडस्ट्री को एक बड़े इंडस्ट्री के तौर पर दिखाने के लिए जो है वो पूरी तैयारी कर दी गई है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने जो है डायस पे इधर नीचे बैठे हुए हैं और एक बार फिर से जो है फ्लाई पास स्टार्ट होगा। अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण पल है क्योंकि अब भारत हर उस तकनीक को लगातार आगे बढ़ा रहा है जिसको कि सोच पाना पहले बहुत मुश्किल था। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पे लगातार किया जा रहा है वो अपने आप में ही एक एग्जाम्पल के तौर पर सामने नज़र भी आता है। जिस तरीके से तेजस तैयार किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत की बात की, साथ ही वडोदरा में एक नई फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया जिसमें कि C-295 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वहां बनाया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि भारत में ही तैयार किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि मेक इन इंडिया होना बहुत ज़रूरी है। फोकस यही है कि जो भी प्रोजेक्ट बने वो भारत में ही तैयार हो। अभी फिलहाल भारत DRDO अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, साथ ही HAL वो भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। जिस तरीके से HAL ने अभी एक एयरक्राफ्ट जो कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उसका डिज़ाइन तैयार किया है। सुपरसोनिक ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट है और ख़ास बात यह है कि इस एयरक्राफ्ट को उसी के तर्ज पर, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट के टेल पर भगवान हनुमान की एक तस्वीर लगाई गई है क्योंकि मारुत जो कि HAL का सबसे पहला एयरक्राफ्ट था जो कि HAL ने फाइटर और बॉम्बर्स तैयार किया था 1960 में। 60 के दशक में जब HAL ने उसको तैयार किया था उसका नाम भी मारुत था। तो माना जा रहा है कि हो सकता है कि इस एयरक्राफ्ट को भी वही नाम दिया जाए। लेकिन अभी फिलहाल पहली बार सुपरसोनिक इस हेलीकॉप्टर ये एयरक्राफ्ट को जेट को फिलहाल यहाँ पे पहली बार दुनिया के सामने रखा जाएगा। जो अटैक हेलीकॉप्टर है, लाइट अटैक LCH रुद्र जो कि वेपनाइज ALH है उसका नाम रुद्र है। तो यहाँ पे जो माइथोलॉजी है उसका जो मिश्रण है या उसकी छाप जो है उसमें नज़र आ रही है। उनके नाम में भी उसी तरीके से नज़र आ रहा है। अब आप सामने अगर हम लोग टारमेक पे देखें, टारमेक पे कितनी सारे एयरक्राफ्ट जो है वो यहाँ पे
खड़े हैं। कोशिश यही है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों की। अगर हम लोग सामने ये ब्लैक कलर का हेलीकॉप्टर देखें, ये एक ALH है और ये अभी भारतीय वायुसेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड सब जगह जो है इसको शामिल किया गया है और अभी एक बार फिर से एयर डिस्प्ले शुरू होगा। खास बात यह है कि DRDO ने 2 अलग अलग तरीके के ड्रोन्स बनाए हैं। एक अटैक ड्रोन है और दूसरा ऐसा ड्रोन जो कि अभी फिलहाल ऊपर से इस पूरे एयरक्राफ्ट को, ये पूरे जो शो है उसको वहां से लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा था। अभी तक, क्योंकि अभी की जो लड़ाई है, हम ये कहना है कि भविष्य की लड़ाई नहीं, जो आज की लड़ाई है वो तकनीक की लड़ाई है और ऐसे में कभी भी फाइटर, क्योंकि मशीन का अगर नुकसान हो जाता है तो बहुत ज्यादा दुख नहीं होता, लेकिन अगर फाइटर चले जाते हैं तो दुख होता है। ऐसे में अनमैन्ड एरियल व्हीकल को सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल पर ज्यादा फोकस किया जाए तकनीकी तौर पर। तो तकनीकी तौर पर जो है वो बहुत ज्यादा लीथल होते हैं। दूर से बैठकर हजारों किलोमीटर दूर आप किसी को भी अटैक कर सकते हैं। कोई भी ऐसा एरिया जो कि आपकी रीच पे नहीं है उसको आप आसानी से वहां पे सर्विलांस कर सकते हैं। तो ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है वो अपने आप में ही सबसे ज्यादा कहते हैं दुर्लभ तकनीक है और हमारे जो एडवर्सरीज है वो भी इस पर बहुत ज्यादा काम करे। चाइना जो है वो लगातार इस तरीके के अनमैन्ड एरियल व्हीकल पाकिस्तान को दे रहा है और हालांकि चाइना की तकनीक कैसी है वो सारी दुनिया में जानती है। अभी आप सामने फ्रेम में आप देख सकते हैं कि फ्रेम में एक सुखोई 30 अभी टेक ऑफ के लिए यहाँ तैयार हो रहा है। Pilots for low-level aerobatics are handpicked from amongst the finest and the highest experienced aircrew of the Sukhoi fleet. हाँ, मैं फ्रेम में दिखाता रहूंगा, मैं इसमें नहीं आता। Handpicked from amongst the finest and the highest experienced aircrew of the Sukhoi fleet. We are standby for the mighty Sukhois to take off right in front of you. From your left, rolling now. The deafening roar of the engines of the mighty Sukhoi taking up the skies. Positioning with the left turn to execute the famous loop tumble yaw. The Su-30 MKI is the only operational aircraft in the world today that can do this extremely complex maneuver.
taking the center stage now. Ready to pull up. Here he pulls up. He is into a loop. This maneuver of the aircraft will describe a circle on the vertical plane. It is inverted, coming as a somersault. We call it the tumble. And that's the yaw, ladies and gentlemen. Loop, tumble, yaw. Definitely during this time, the aircraft says goodbye to all known laws of aerodynamics. This combat maneuver helps him to change his direction mid-flight. Apart from the sheer flying skill, this exquisite maneuvering was made possible by a combination of thrust-vectored engines and fly-by-wire technology. This time from our right, positioning along the runway, taking you for a rock and roll. Here he goes, spinning right in front of the dais. Flying in this manner requires not only a good degree of situational awareness but also absolute mastery on the aircraft and a thorough knowledge of its capability. One more time, shift your gaze towards your left. Do you know what distinguishes supersonic aircraft from each other? It is the ability to fly low and slow, and this is precisely what the MKI will demonstrate to you now, coming in from your left. The speeds are as low as 240 to 250 kmph. And at this moment, the phrase, "time stands still," does all the justice to this picturesque moment. For today's display, both Suhag and Jaipreet have mastered their roles and are now ready to showcase yet another unique feature of the aircraft. After the right turn, they are again coming to take the center stage. Keep following the aircraft with a bank. Here he comes, 12 o'clock to us. Here he pitches up. It's just as cutting the sky into two halves as easily as you slice fruits with your kitchen knife, and that's why we call it the slice. This astounding maneuver was only possible due to the sheer skill of the pilot and the spectacular handling characteristics of the Sukhoi at all speed regimes. And now coming in for the high-speed run along the dais, this aircraft is now running at 900 kmph. And as the saying goes, don't be fooled by the noiseless dash. Thunder always follows the Sukhoi 30 MKI. As you're seeing the pilot turning left, he will shortly lower the landing gear to come in for a landing. Now generally an aircraft takes the full runway to come to a full stop after landing. However, the fighter will now demonstrate the short landing capability where you will see it complete its roll in less than half the runway, coming to a halt well short of you.
from your left, coming in for landing. With the grace and all the panache, you're now seeing the aircraft touching down. And now the pilot has deployed the brake parachute to ensure a very short landing run. Ladies and gentlemen, can we hear it loud for very on thunderous yet mighty, the Sukhoi 30 MKI. Ladies and gentlemen, after that captivating display by the Sukhoi 30s, here we have in front of us the light combat helicopter, the Prachand. Though light in weight, this machine carries the punch of a heavyweight. This aircraft has entered operational service, and it is absolutely certain it would live up to its name, the Prachand, the fierce, striking terror in the hearts of the enemy. The display today is being performed by Wing Commander John and Group Captain Rajiv Dubey. Ladies and gentlemen, please notice the rapid pull-up and the unique ability of the rotor as the pilot bunts the helicopter under negative G to come to a hover position far away from the ground. As you can see, this flying machine, the Prachand, has sufficient reserve of engine power and the rotor thrust. The Prachand now is diving sharply, gathers momentum to come in front of us to demonstrate sharp minimum radius turns. वश नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों में मार दो मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो आरंभ है प्रचंड दो मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी में तुमको हार दो हार मान शाम या जान खाओ लाल आज धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड. Ladies and gentlemen, here she is, the light combat helicopter Prachand, right in front of you. It's now ready to perform some lateral movement parallel to the runway, which will culminate in the majestic extreme tail-up maneuver. Here she is.
moving rearward at top speed. प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो मान शान या की जान का उदान आज Now she goes tail up, the extreme tail up maneuver. This demonstrates the razor sharp response and the control path available to the pilot. धनुष के बाण में उतार दो Hindustan Aeronautics Limited has placed India among those very few countries that have capability to design, develop and produce dedicated combat helicopters. Combined with a single-engine light utility helicopter, World War Horse ALH drone, HAL has rendered India truly Atmanirbhar in rotary flying machines, both in intent and in content. Is doing a rudder turn right in front of us. Self-reliance in such strategic machine is unequivocal for India's defense, and products like ALH, the light combat helicopter Prachand and the new baby light utility helicopter are part of Atmanirbhar success story of HAL. Ladies and gentlemen, please give a warm round of applause as the Prachand is exiting after an enthralling display. हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों में मार दो मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो शान या जान का उदान आज धनुष के बाण में उतार दो आरंभ है प्रचंड From the skies, it's again the runway. You are about to witness the power-packed takeoff of the Surya Kiran aerobatic team. They will take off in synchronized set of 3 twice, and the single 3 aircraft will take off right after them. We are standby for the Surya Kiran aerobatic team takeoff. The first 3 set, ladies and gentlemen, taking off right in front of you.
It's a 9 aircraft display team. Following the first are the second 3 set. Rolling behind them, the single 3 aircraft. And as they take off, they will be back with a bang. In a short while from now, we will present to you the thrilling, ever-scintillating and heart-stopping air display of the indigenous lightest fighter of the world, Tejas. You will be able to watch the magnificent maneuvers of this aircraft on the screen placed in front of you, showing the live feed provided by DRDO's indigenously developed UAV Tapas. Wing Commander Karthikeya, fondly known as Cat amongst his friends, has lined up the Tejas on the runway for the first maneuver, the show-off takeoff. This maneuver is designed to showcase the might of the powerful GE 404 engine. Ladies and gentlemen, Tejas rolling and piercing into the blue skies of Bengaluru. As the aircraft inverts and comes down again for the next maneuver, please brace yourself for the hesitation roll. Please look to your right as the aircraft accelerates for the next maneuver and carries out a point roll and stops each time over. There it goes. 1, 2, 3 and 4. And here it rolls again. Continuing to enthrall you all, it pulls up again to execute the vertical pitch back. Watch the curve as it goes up into the lovely skies and dives down again, spots an adversary and starts turning like a beast. As we see the aircraft moving away, let us remind you of the decades of effort which have gone into making this program a resounding success. Without the foresight and technical acumen of every individual involved, this success wouldn't have been possible. Please look to your left as Karthikeya prepares to push the aircraft to the other end of its envelope with a red eye negative G turn.
There it goes, turning the other way around and showing off the versatility of not only the aircraft, but of the pilot too, as he sees all the red in the world. Ladies and gentlemen, please look ahead as the aircraft positions itself square of the desk for the vertical Charlie. There it goes, pulling up into the sky, showing off the Delta platform. Illustrating the Indian Air Force's motto, touch the sky with glory. Here it goes, rolling towards the blue yonder. Please look to your left as Karthikeya starts knocking off some speed to greet this wonderful gathering and flying past you at a snail's pace. Ladies and gentlemen, towards your left, Tejas is so slow at a speed of 120 knots that even the winds stop to stare. Ladies and gentlemen, from your left, the slow speed run. As he engages the burners of the powerful 4E404 engines, the aircraft rapidly climbs out and positions for the next maneuver of a half roll. The kind of weapon that the aircraft carries is phenomenal, and that makes the combat capability tremendous and lethal. Please shift your gaze to the right. Karthikeya prepares to roll and invert the aircraft. He will greet all of you in Spider-Man style and then roll all over again. As Wing Commander Karthikeya prepares off and prepares to land, let me tell all of you that with the induction of the Tejas, the Indian Air Force in particular and the Indian aerospace industry as a whole has come a long way in indigenization and self-reliance. With enhanced capabilities in terms of envelope expansion, better avionics, and air-to-air refueling, the Tejas can call itself a truly modern platform. As Karthikeya touches down, I would urge all of you to please give a huge round of applause for our very own Tejas and its braveheart pilots.
after the scintillating LCA. Time now. Soon crossing overhead and flying in an arc will be the globe formation. Coming in from your left, ladies and gentlemen, now the C-17 Globemaster along with the Hawks of Surya Kiran aerobatic team. C-17 Globemaster is a massive long-haul aircraft that has been tackling distances and oversized loads. Right now in an arc formation in front of you, the C-17 Globemaster with the Hawks of Surya Kiran aerobatic team. Ladies and gentlemen, please look right ahead. The light utility helicopter. HAL is extremely proud to present here in display its youngest and latest member of the growing helicopter family. A few minutes earlier, this was the aircraft that led that 15 aircraft helicopter Atmanirbhar formation. He's doing it. Salute to the dais. The display today is being performed by HAL Chief Test Pilot Wing Commander Unni Pillai along with Wing Commander Bambani. Wing Commander Unni has flown over 8,000 hours over 30 different types of flying machine, both fixed and rotary wing. He has been the CTP, the Chief Test Pilot of Hindustan Aeronautics Limited for over 14 years in his illustrious career spanning over 38 years both in Indian Air Force and Hindustan Aeronautics Limited. Ladies and gentlemen, here we have the light utility helicopter right in front of us performing a unique helicopter maneuver, the pirouette. Wing Commander Unni Pillai is keeping the nose pointed to the center as he laterally traverses the circumference of that circle. A very deft maneuver. This demonstrates adequate control power, agility, and the extreme experience of the test pilot. Here they go and perform the extreme tail-up maneuver. Designing a helicopter for India's vast and varied terrain with its conflicting requirements is a daunting task. HAL lived up to this challenge, achieving it completely in-house in designing light utility helicopter. HAL therefore is capable of fully customizing this helicopter to any specific needs of any customer, civil or military, Indian or foreign. The light utility helicopter, after its operational clearance, has now entered the production phase. More than 1,000 of these helicopters are expected to be rolled out from the recently inaugurated Asia's largest helicopter factory in Tumkuru. The helicopter is now performing a few stall turns in front of us.
Ladies and gentlemen, the LUH has completed its captivating display in front of us. The display today is more special as it happens to be the final display of HAL Chief Test Pilot Wing Commander Undi. He will be hanging his boots next month after a glorious career as a test pilot. Thank you very much, Wing Commander Undi, for your leadership. And ladies and gentlemen, please give a warm round of applause, wishing both the man and the machine good luck. देवी एवं सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें एम्बेसडर्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स के नाम से विख्यात सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का ग्रुप कैप्टन GL ढिल्लों के नेतृत्व में। और सूर्य किरण 7 अब आपकी बाई ओर पोजीशन हो चुके हैं। आप सब के जोश लेवल्स को बढ़ाने देयर इज क्वार्टर लीडर भल्ला फ्लाइंग इन्वर्टेड। अब सूर्य किरण टीम आ रही है आपकी बाईं ओर से बैरल रोल के लिए। मैं सारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि इस मैनूवर के दौरान टीम के सारे मेंबर्स एक दूसरे से मात्र 5 मीटर की दूरी पर उड़ान भर रहे हैं। ऐसा लग रहा हो मानो एक अदृश्य डोरी से बंधे हुए हो। टीम ने करीबन 72 शहरों में 600 से भी अधिक डिस्प्लेस करने का दुर्लभ लक्ष्य प्राप्त किया है और केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी भारतीय वायुसेना का परचम लहराया है। इनमें से कुछ देश हैं म्यांमार, श्रीलंका, लाओस, चाइना एवं UAE। And that was number 7 buzzing through the skies to carry out a vertical Charlie. नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों के अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब आप सूर्य किरण टीम को अपने ठीक सामने से अपनी ओर बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं। Approaching from straight ahead, the team is now coming for a crossover break, and let's hear out for the leader's call. Correction, break now. आप देख सकते हैं सूर्य किरण 1, 2, 3 और 4 को आसमान की बुलंदियां छूते भारतीय वायुसेना के आदर्श वाक्य नभ स्पृशम दीप्तम को चरितार्थ करते हुए।
glossy bright aircraft that you just saw in the skies are kept ready to fly by our maintenance team, led by Wing Commander Rana and Master Warrant Officer Kuldeep Kumar. Next, please allow me to take you on a journey where we're bringing the thrill lower and closer to you. Lower and closer to you. Earlier we were flying at 500 feet, but now we will dazzle you by flying at heights of mere 100 feet above the ground and at crossing speeds in excess of 1500 km per hour. Coming in for a barbed wire cross are Suryakirans 8 and 6 from your left and Suryakirans 9 and 5 from your right. After that, coming in from your right is and 5 aircraft in an arrowhead formation making the alphabet A. Please look to your right. Advancing next from your right will be Suryakirans 1, 4 and 7 with Suryakirans 2 and 3 ready to draw circles around them. Flying as number 2 is Squadron Leader Garg and as number 3 is Wing Commander Bhardwaj. They will be making a helical structure resembling the shape of a DNA. And in our DNA, we store the team's motto of Sadaiv Sarvottam, or always the best. From your right, there goes number 3, being closely followed by number 2.
next to the skies are the synchro pair. Please shift your gaze to the front. From the left, that is number 6, our very own Cupid, drawing an arrow through the heart. And there it is, a beautiful Suryakiran heart dedicated to Aero India 2023. और आज के आखिरी सूर्य किरण मैनूवर के लिए अब आप टीम को अपने ठीक सामने से अपनी ओर बढ़ता हुआ देख पाएंगे। तो आए सुने सूर्य किरण टीम लीडर की कॉकपिट से उनकी आवाज। सूर्य किरण जय हिंद। और ये था टीम लीडर का सल्यूट हमारे मुख्य अतिथि को। आज हमारे साथ ग्राउंड पर उपस्थित है विंग कमांडर अश्विन हमारे कैमरा क्रू के साथ। आज इनकी जिम्मेदारी है ये सुनिश्चित करना कि आज का डिस्प्ले व टीम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो तथा टीम लीडर तक रेडियो द्वारा जरूरी संदेश पहुंचाना। Other than the pilots flying today, we have Squadron Leader Chandel and the Squadron Doctor is Squadron Leader
displays to celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav or 75 years of Indian independence. Some of the cities where the displays were carried out are Bhubaneswar, Puri, Guwahati, Kalaikunda and Vadodara. To keep up with the schedule of our team, you can follow us on Suryakiran_IAF on Instagram, Twitter and Facebook. जैसा कोई नहीं है, नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। सलाम माँ तुझे सलाम, मम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। As the Suryakirans taxi back, I, Flight Lieutenant Ribima, the team commentator, would like to thank all of you for being such a wonderful audience. Ladies and gentlemen, we extend our heartfelt gratitude to our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, and other dignitaries who have graced this occasion. With the inaugural of Aero India 2023, we have formally set the runway to 1 billion opportunities. देवियों एवं सज्जनों, अब हमारे मुख्य अतिथि